Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shweta and I am a doctor by profession and right now I'm figuring life post MBBS. So today I'm here to tell you some tips to survive in a medical college. वैसे तो तुम्हें बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे YouTube में to how to crack a medical college, how to study in a medical college, how to crack NEET, UG, PG and everything. Study with me. But I am here to tell you the inside tips to survive in a medical college mentally. Because medical college and before medical college life is very different. Like academically, age wise and sab kuch, and it takes a lot of energy to understand actually to what exactly is happening with us at that age of 2022. And I have learned from my experiences and बहुत मेहनत, hard work and अपना कटवा के है मैंने अपने ये सारे एक्सपीरियंस जो मैंने जॉट डाउन करा है. सो आई एम गोना टेल यू दोज एक्सपीरियंसेस. So first thing first is do not compare yourself with anyone, like anyone. Remember one thing in your mind ki your worth is not decided by anyone, not your parents, not your teachers, not your siblings, your friends, your peers, no one, not your degree. So do not decide your worth because of a paper or a subject or a teacher telling you something. No, ड्रॉप दैट. ये इस चीज से तुम्हें डिटैच होना पड़ेगा कि मेरे मार्क्स कम आए हैं तो शायद मैं उतनी केपेबल नहीं हूँ. दिस थिंग्स शुड बी ड्रॉप फ्रॉम योर हेड. Number two will be failures. I'm sorry to say, but yes, there would be lot of failures throughout your medical journey. अब failures की definition सबके लिए अलग अलग होती है. टॉपर्स के लिए कम मार्क्स मिलना फेल होता है, एवरेज लोगों के लिए फेल होना इज अ फेलियर. सो जब वो फर्स्ट सब्जेक्ट में या फिर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं ना, दैट इज अ बिग शॉकर फॉर सम पीपल. बिकॉज इफ यू आर इन अ मेडिकल कॉलेज, you have worked hard to be there. That means you have given whole your life पढ़ाई में, and now you're failing in a subject जो तुमने कभी फेल आज तक करा नहीं था. So that's when you start questioning all your success, all your past achievements, everything. But no, 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 that's a big no. वो टाइम में समझ नहीं आता कि it becomes a very big deal at that moment. But I am telling you one thing, trust me on this. It doesn't matter. It doesn't matter you fail in a subject. It doesn't matter तुम्हारी back लग रही है. It doesn't matter after like 6 months. Hold on to that. Study and you'll get up again. Fine. But I'm telling you from my experience, I know it's a big deal for you right now, but you should not take this to your heart. Number three, I would say if you have any kind of hobbies in your life, like पहले था तुमने करा नहीं because of the preparation for NEET UG, start doing it. Start doing it, guys. क्योंकि when you do not work on yourself, regret after some time. If you like dancing, go dance. If you like singing, go sing your heart out. If you like any kind of sports, do it. Do it. क्योंकि I regret not doing anything. Number 4, I lost the count. Listen to everyone, but do what you feel like. क्योंकि मेडिकल कॉलेज में तुम्हें ज्ञान देने वाले लोग बहुत होंगे. लाइक तुम 2 कदम चलोगे तुम्हें 10 ज्ञान मिल जाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने लोगों को तुम फिल्टर आउट करो. बहुत लोग आके तुम्हें बहुत ज्ञान देने वाले हैं. इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू फिल्टर आउट व्हाट यू वांट फॉर योर लाइफ. And it is very very normal. You do not have to run on the race which everyone is running for. It is fine to be that penguin, you remember. It is fine, it's fine to be that. So the last one is my favorite. Have good friend circle. I mean, I cannot emphasize more on it, but it is very important क्योंकि and I feel very pity for people who do not have one, but I was very very grateful to have that friend circle of mine who I can run to, rant about, cry near them without any judgment. I mean, they would come near me if something goes wrong, and something every time it goes wrong in my MBBS journey. मेरा MBBS journey एक भसड़ था. Everyone knows about it, whoever knows me personally. So we'll talk about that someday. So
Yeah, having those good friends helped me a lot. So I think having a family outside your home is very important, and earn those good friends and your life will be easier in a medical college. So that's it for my video today, and I'll be coming up with my next video very soon. And I hope this tips helps you in your medical journey. And these are the tips जो मैंने अपने experience से सीखा है, बहुत सारे ठोकर खा के. So I hope आप लोगों को पहले ही ये ज्ञान मिल गया है. तो yes, that's a last tip I would like to say. That's a pro tip क्योंकि ये मैंने कभी फॉलो नहीं किया है, बट आई हैव सीन पीपल हु हैव फॉलोड इट एंड वर्क फॉर देम. सो अगर आपके लिए काम कर रहा है तो डू यूज इट. दैट इज टीचर्स की चापलूसी. इट वर्क. आई मीन इट रियली वर्क. लोग इतने मेहनत करके भी कुछ नहीं हो रहा था, बट चापलूसी करके बहुत कुछ हो रहा था लोगों के. तो आई थिंक पीपल डू दैट एंड इट वर्क फॉर देम. क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज में एक हायरार्की मेंटेन होता है एंड तुम जितना चाटोगे उतना. सो आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट एंड आई हैव सीन देयर ग्रोथ इन अ मेडिकल कॉलेज. अगर काम आ रहा है तुम्हारा, तुम कर सकते हो तो कर लो भाई. सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट हु आर स्टार्टिंग योर मेडिकल जर्नी. लोड नहीं लेने का, सब कुछ हो जाता है. नथिंग मैटर्स. बाद में कुछ 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 मैटर नहीं करता. माई लाइफ इज ऑसम नाउ. श्योर गाइस.